हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ SLRC 2022 पेपर 4 और सीरीज़ ए के ग्रेड 3 के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छे लगेंगे। इसमें टोटल जीके के 50 क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है एंड इट इज़ फुल्ली सॉल्व एंड आई होप सो दैट आप सबको ये वीडियो अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टर्म तीर्थंकरा इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन दिया है जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जैनिज्म. Tirthankara is associated with Jainism and total there are 24 Tirthankaras. Okay. Now next question number 2. The state of Northeast India that does not share border with Bangladesh. We have to find out the answer. That is the state of Northeast India that does not share border with Bangladesh. So here option given Manipur, Tripura, Meghalaya and Mizoram. And the correct answer is option number A, Manipur. Manipur is the state that does not share border with Bangladesh. Question number 3. Find out the odd one. We have to find out the odd one. मतलब इसमें जो गलत है, ऑप्शन में जो गलत है वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दिया है ऑप्शन में गैंगटॉक, इम्फाल, अगरतला एंड दीमापुर। एज वी ऑल नो गैंगटॉक कैपिटल है, इम्फाल भी कैपिटल है, अगरतला भी कैपिटल है। गैंगटॉक किसका कैपिटल है? गैंगटॉक है आपका सिक्किम की कैपिटल, ठीक है। और इम्फाल है मणिपुर की कैपिटल, अगरतला है त्रिपुरा की कैपिटल। लेकिन दीमापुर तो कैपिटल नहीं है, दीमापुर एक डिस्ट्रिक्ट है, वो भी नागालैंड का, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो इसमें कौन सा गलत हुआ? बाकी तीन तो सब कैपिटल है और ये डी नंबर है डिस्ट्रिक्ट, दैट मीन्स ये डी नंबर ही ओड है इसमें। तो क्वेश्चन में ही ऑलरेडी बोला है फाइंड आउट द ओड वन, जो गलत है इनमें से, मैच नहीं करता, गलत है, वही फाइंड आउट करना है। इसका ये दीमापुर ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Which one of the following group is the festival लाई हरावा एसोसिएटेड विद? एक फेस्टिवल है जिसका नाम है लाई हरावा, वो किससे एसोसिएट है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है मिसिंग, कार्बीज, गारोस एंड मेथीस। लाई हरावा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? वो है मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। और मणिपुर के ये मेथीस लोग ही इसको मनाते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5. वेयर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज कांगला फोर्ट लोकेटेड? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कांगला फोर्ट कहाँ पे है? ऑप्शन दिया है अगरतला, गैंगटॉक, ईटानगर एंड इम्फाल। वो है ऑप्शन नंबर डी, इम्फाल, मणिपुर इम्फाल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट? हमें क्या ढूंढना है? ये ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है वो निकालना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गिवन सुंदरबंस डेल्टा इज ए होम टू द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, ये तो सही है। बी नंबर चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइका प्रोड्यूसर, ये भी सही है। ईस्टर आइलैंड इज ए लैंड एरिया दैट इज एंटीपोर्टल टू इंडिया, ये भी सही है। डी नंबर इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक इज लोकेटेड इन गुजरात, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक कहाँ पे है? वो गुजरात में नहीं है, वो है राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान के कौन सी जगह पे है ये है नागौर एंड जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये। और लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है? ये है सांभर सॉल्ट लेक, और वो सराउंडेड बाय अरावली हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. According to the Election Commission of India, in order to be recognized as a national party, a political party must be treated a recognized political party in at least how many states? ऑप्शन दिया है 1, 4, 5 एंड 3। जैसे कि हमें पता है इलेक्शन कमीशन इज़ ए सोल अथॉरिटी दैट डिक्लेयर्स एनी पार्टी एज द नेशनल पार्टी और द स्टेट पार्टी। इसके लिए एटलीस्ट 4 स्टेट्स में आपको रिकॉग्नाइज किया जाना पड़ेगा, तभी आप वैलिड होंगे, ठीक है। सो इसके लिए 7 नंबर का आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर बी 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. हु अमंग द फॉलोइंग सेड फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? ये किसने कहा था? ऑप्शन दिया है चंद्रशेखर आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले एंड भगत सिंह। ये सेंटेंस किसने कहा था? हम सबको पता ही है, ये सेंटेंस कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, और वो भी कब कहा उसने? 1916 को, कर्नाटका में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फाउट बिटवीन अकबर एंड हेमू वॉज इन द ईयर? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526 को। और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ है? ऑप्शन देखिए 1526, ये तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है,
ऑप्शन बी 1536 गलत है। 1556 ये सी नंबर इज द करेक्ट वन। सी नंबर 1556 में ही सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, और वो भी किसके बीच में? अकबर एंड हेमू के बीच में, एंड अकबर डिफीटेड हेमू, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, When did the Election Commission of India first enforce the none of the above यानी कि नोटा NOTA in the voting option in the assembly election in India? ऑप्शन दिया है अगस्त 12, नवंबर 2013, जनवरी 2015, अक्टूबर 2014। अगस्त 2012 ये तो नहीं है, नवंबर 2013, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑप्शन दिया है पेरिस, बी नंबर डाहोक, वाशिंगटन डीसी एंड न्यूयॉर्क। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, डाहोक नेदरलैंड पे है ये, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, Which one of the following steps did the Rowlatt Act incorporate? ऑप्शन दिया है force to buy foreign goods, restriction on wearing khadi, imprisonment without trial, restriction on traveling abroad. The Rowlatt Act is incorporated with option number C, that is imprisonment without trial. Question number 13. In which year did the Supreme Court of India appoint its first woman judge and whom did it appoint? यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1985 आर भानुमति, 1987 इंदु मल्होत्रा, 1989 Fatima Bibi, and 1992 Indira Banerjee. And the correct option is option number C, 1989 Fatima Bibi. Question number 14. The minimum age for acquiring voting right in India was reduced from 21 years to 18 years in the year. Option given 1986, 1988, 1990 and 1992. So the correct option is 1998. In the year 1998 and 61 amendment. Okay. In this amendment, it is mentioned that the minimum age for acquiring voting right in India was reduced from 21 years to 18 years in the year 1988. Now, question number 15. In which year did the British transfer the capital of India from Calcutta to Delhi? Option given 1911, 1913, 1907, 1910. And the correct option is option number A, 1911. And that is during the reign of Lord Hardinge II. Actual transfer was in the year 1912, but the transfer of capital from India to Calcutta to Delhi, that is in the year 1911. Now question number 16. The chief of the Ahom military during the reign of Chuhungmung and the husband of Mullah Gabaru was option given Purnananda Buragohain, Presenmong Borgohain, Kamsen Borogohain, and Konseng Borpatra Gohain. And the correct option is option number B, Presenmong Borgohain. Now question number 17. In which year the title Viceroy was given to the Governor General of India? Option given 1867, 1858, 1876 and 1905. And the correct option is option number B, that is 1858. Question number 18. Given Bodoland Territorial Council is a result of which of the following constitutional provision? As you all know, that is option number C, 6th schedule. Question number 19. Pakyong Airport is located in option given Arunachal Pradesh, Sikkim, Manipur and Mizoram. And the correct option is option number B, that is Sikkim. Question number 20. The most common animal figure found at all the Harappan sites is the option given unicorn, bull, cow, elephant and tiger. And the correct option is option number A, that is unicorn, bull. Question number 21. How many rings are there on the Olympic flags? Option given 4, 5, 6 and 7. And the correct option is option number B, that is 5. Question number 22. The capital city of Argentina, option given Buenos Aires, Santiago, Bogota and Lima. And the correct option is option number A, that is Buenos Aires. Question number 23. Air Asia has its headquarters in option given Mumbai, Kuala Lumpur, Jakarta and Bangkok. And the correct option is option number B, Kuala Lumpur. Question number 24. Which of the following is not an operating system for computer? Option given Windows 11, Linux, Microsoft Office and Ubuntu. And the correct option is option number C, that is Microsoft Office. Question number 25. Which of the following is presently considered as the highest Himalayan peak of India? Option given Kanchenjunga, Nanda Devi, Kamet and Mana. And the correct option is Kanchenjunga. Question number 26. Which mythical underground river is considered to have joined Ganga and Yamuna at Triveni Sangam of Prayagraj, formerly
Prayag of Allahabad. Option given Bhagirathi, Alakananda, Saraswati and Satadru. As you all know, option C is the correct one, that is Saraswati river. Question number 27. Which of the following is measured in carats? That is no doubt option number D, gold. Question number 28. Which branch of study deals with the history of life on Earth as based on fossils? Option given paleontology, archaeology, geology and geomorphology. And the correct answer is option number A, that is paleontology. Question number 29. Which instrument is used to measure the atmospheric pressure? Option given nanometer, barometer, altimeter and hydrometer. And the instrument that measures the atmospheric pressure, that is a barometer. Option number B is the correct one. Question number 30. In a game of Coco, how many members of chasing team enters the field and sit on their knees? So option given here 8, 10, 9 and 7, and the correct option is 8. 8 members sit on their knees. So option number A is the correct one. Now question number 31. Which of the following is not native to India? Option given here chimpanzee, one-horned rhino and pygmy hawk and leopard. And the correct answer is, that is option number A, chimpanzee. Chimpanzee is not a native to India and it is found in the savanna of Central and West Africa. Now question number 32. Which is officially the national tree of India? As we all know, that is option number B, banyan tree. Banyan tree is regarded as a national tree of India. Question number 33. Agnes Gongsa Bejaschui has been more popularly known as. Option given Miraben, Arundhati Roy, Mother Teresa and Sister Nivedita. And the correct option is option number C, Mother Teresa. Mother Teresa's real name is Agnes Gongsa Bejaschui. Question number 34. Who invented the codes for telegraph? Option given Benjamin Franklin, Samuel Morse, Albert Einstein and John Baird. And the correct option is option number B, that is Samuel Morse. Question number 35. What is the full form of NEFA as Arunachal Pradesh was known earlier? Option given Northeast Frontier Area, Northeast Frontier Assembly, Northeast Frontier Activity and Northeast Frontier Agency. And the correct option is, that is option number D, Northeast Frontier Agency. Question number 36. Which of the following festival is mainly celebrated in Kerala? Option given Diwali, Onam, Pongal and Lohri. And the correct option is option number B, that is Onam. Question number 37. The main male lead role in which movie was played by Zubin Garg? And the option given Mission China, Mission Kashmir, Mission Chennai and Mission Kabul. And the correct option, that is Mission China. Question number 38. Who wrote the book Malguri Days? Option given R.K. Lakshman, K.R. Narayanan, R.K. Narayan and R.K. Pandit. And the correct option, that is option number C, R.K. Narayan wrote the book Malguri Days. Question number 39. Drones are option given interstellar laser weapons, night vision binoculars, crawling landmine detectors, unmanned aerial vehicles. And the correct option is, that is option number D, unmanned aerial vehicles. Question number 40. In the following list, who was a football player? Option given Gilbertson Sangma, Karpiu Roy, Taya Bunesa and Mittu Borua. And the correct option is, that is option number A, Gilbertson Sangma. Now question number 41. Which of the following state does not share border with Assam? Option given Nagaland, Sikkim, Mizoram and West Bengal. And the correct option is, that is option number B, Sikkim. Sikkim does not share border with Assam. Question number 42. Which district of Assam was created in January 2022? Option given Bojali, Baksa, Tamulpur and Hosai. And the correct option, that is option number C, Tamulpur. Question number 43. Who presented a budget for 2021 to 2022 in Assam? Option given Himanta Biswa Sarma, Ajanta Nyok, Atul Bora and Pranos Pegu. And the correct option is option number B, that is Ajanta Nyok. Question number 44. Which of the following river is on the south bank of the river Brahmaputra? Option given Manas, Subansiri, Dikau and Ranganadi. So Manas is in the north side, Subansiri is also in the north side, that means the north bank of the river Brahmaputra, and Dikau, that is in the south bank of the river Brahmaputra, and Ranganadi is also a north bank of the river Brahmaputra. So we have to find out the south bank of the river Brahmaputra, that is option C is the correct one, that is Dikau. Question number 45. Which one among the following is the oldest production unit? That is, we all know, Digboi Refinery. So option A is the correct one. Question number 46. Which among the following is a UNESCO heritage site? Option given Majuli, River Island, Sualkusi, Kamakya Temple, Manas National Park. And the correct option is option number D, Manas National Park. Question number 47. Kaziranga National Park does not touch which of the following district? Option given Golaghat, Karbi Anglon, Nagaon and Morigao. And the correct option is, that is option number D, Morigao. Question number 48.
Whose resting place is at Saraguri Chapori at Dikomok near Sibsagar? Option given: Vishnu Prasad Rava, Sargadev Sukapa, Ajahn Pir and Srimanto Sankardev. And the correct answer is option number C, Ajahn Pir. Question number 49. Who established a Gurudwara at Dubri? Option given: Guru Nanak, Guru Tegh Bahadur, Guru Angad and Guru Anjan. And the correct option, that is Guru Tegh Bahadur, option number B. And the last question for today's video, that is question number 50. Who was the first female actress of Assamese cinema? Option given: Aidev Hendik, Eva Aso, Avanti Hendik and Vidya Rao. And the correct answer is, that is Aidev Hendik. Aidev Hendik was the first female actress of Assamese cinema, and that cinema name was Joymoti. That is in the year 1935. So option A is the correct one for this question number 50.